जिस दिन मुझे मेरे periods आए, my mom wasn't home. My dad was home. And I remember he was the one who actually bought my first packet of sanitary napkins. The next day, there was a party thrown for me because he's like, it's a very big moment in my daughter's life. Bandra में ना fair लगता था. I think I was 14. तो बहुत भीड़ थी और मैं आगे जा रही थी और मुझे बार-बार somebody was pinching my ass. And I was getting paranoid. On an everyday basis, I deal with sexism. Like my sister and I, we are starting like a venture of ours together. Yes. They can't even look at me in my eyes and have a straight conversation with me. I started earning my own money when I was 17. And touch wood, I've never 7,000 रुपए. वो 7,000 से लगता था कि मेरी पूरी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी. Yes. हमारे नेचर में to overshare हर चीज के बारे में. You know, and also I feel women in general are very, very secure. True female friendship ना आपका एक cushioning होती है. Hi, I'm Bhumi Pednekar and you're watching me on Hot Fan. हाय भूमि, क्या हाल है आपके? बढ़िया, आपके? यार आपको ना बड़ा डिमांड करती थी हमारी ऑडियंस मेल फेमिनिस्ट पे, तो हमको लगा कि आपको लेके आना चाहिए जरूरी. I mean, बनता है ना. आप इतने मतलब दमदार कैरेक्टर करते हो, अच्छी अच्छी कहानियां उठाती हो, तो मतलब आई थिंक लोगों को लगने लग गया कि आप थोड़ा उनके लिए भी बात करती हो. ऐसा है क्या? किसी और ने भी बताया आपको ऐसा? यार मतलब हाँ, यूजुअली मेरे इंटरव्यूज में ये मुझे बहुत ऑफ्टन पूछा जाता है दैट यू नो योर रोल्स ऑफ अ सर्टेन टाइप, सर्टेन मैसेजिंग होती है एंड फेमिनिस्ट थीम्स यूजुअली मेरे फिल्म में होते हैं. द कैरेक्टर कैन बी फ्रॉम any walk of life. She is kind of fighting gender bias in her own world. I think कहीं ना कहीं conscious decision भी है because मैं एक ऐसे family में पैदा हुई हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा female energy और female energy को बहुत बढ़ावा भी दिया जाता है. अरे वाह. So I feel somewhere it also comes from that. कि you know, पिताजी ऐसे थे आपके? Absolutely. मेरे father एक male feminist थे. My father was a male feminist and I've always had working parents. मैंने मेरी मम्मी को एक बहुत ही छोटी my mother's always been a working parent and जो एक नॉर्मल आपका रेगुलर फैमिली सेटअप होता है उसमें आप यूजुअली यू नो जेंडर रोल्स बहुत डिफाइंड होते हैं, है ना. तो मेरे घर में जेंडर रोल्स एक्चुअली नहीं थे डिफाइंड. इनफैक्ट दिस एक्चुअली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टोरीज बिकॉज़ वी आर स्पीकिंग अबाउट माय फादर. माय फर्स्ट पीरियड स्टोरी, राइट, हर लड़की के लिए. सॉरी, योर सिस्टर एंड यू हैड अ कन्वर्सेशन या मम्मी ने बताया पीरियड्स के बारे में? नहीं, दीदी मैं हूँ, वो छोटी है. सॉरी, वो इसलिए मैंने करेक्ट किया ना फटाक से कि समीक्षा छोटी है. तो ऑब्वियसली हमें स्कूल में सिखाया गया था एंड यू नो व्हेन जब आप उस टीनेज इयर्स के आसपास आते हो समवेयर यू नो यू आर वेटिंग कि अब आएंगे तब आएंगे. लेकिन जिस दिन मुझे मेरे पीरियड्स आए, माय मॉम वाजंट होम. My dad was home and I was howling and crying because you know it was like पूरी दुनिया खत्म हो गई है मेरे लिए. I don't know why. And I remember he was the one who actually bought my first packet of sanitary napkins. He handheld me through the entire process. The next day there was a party thrown for me because he's like, it's a very big moment in my daughter's life. I remember my father, like you know when you're a teenager, your body really hurts periods के वक्त, you know, because आपकी body आप बड़े भी हो रहे होते हो. Your body is going through so many hormonal changes. You don't know what's happening. There would be times where like I would wake up to my father kind of massaging my feet because he knew I was in pain. He would like prepare hot water bottles for me. So nice. My father was a male feminist. You know, I don't know why I immediately kind of thought of that. My father-in-law is that guy. He has 3 different kinds of heating pads. He just gave her one of those full patti wala. एक बहुत बड़ा privilege होता है to have men like this in your life. होना नहीं चाहिए एक idealistic world में, इसलिए हम सब मतलब ये hygiene है ना. It should just be. हाँ, मतलब ऐसे ही होना चाहिए ना. मतलब बात वही हो गई that not to have nurturing women in your life. So why should you not have nurturing men in your life? आपको याद है एज अ चाइल्ड कुछ आपने उनमें देखा और बोला कि यार मैं ऐसी बनूंगी? As a child ना, all my mom's friends and my mom ना, जब मैं स्कूल जाती थी ना, जब मैं छोटी थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था that why is my mom not here? Because gender roles इतने defined होते हैं. But with time I realized that the person I am has a lot to do with seeing my mother have that life. To see her friends genuinely live life on their own terms. And they were such brilliant parents. I think like my sister and I turned out more than fine.
we are compassionate, we are nurturing, we are ambitious, we have drive, और यही चीजें उनमें भी थी. तो ये ना हमें generationally passed down हुआ है. But you didn't have like an in time कि भाई इतने बजे तक घर आना है. Of course था. हाँ, कितने बजे? डिसिप्लिन तो था, वो एज के साथ चेंज होता रहा. माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, पर हम सबसे ज्यादा उल्लू भी उन्हें बनाते थे. ही वॉज सो नाइव कि वो बन जाते थे. मैं भी अपने पापा का सोच रहा हूँ कि फोन पे लगे हैं, बहुत बिजी हैं, अभी पूछ लो सारी बात. जाओ थोड़े पैसे मिल गए. या वो स्पॉइल भी सबसे ज्यादा पापा करते थे. Like if we had to go for like stayovers and all, पापा जाने देते थे. And मैंने बहुत मस्ती की है बचपन में, बहुत. And thank God मैंने किया. मुझे लगता है maybe my parents knew about it as well, but एक trust था कि उन्होंने हमें रहने दिया. I knew what their boundaries were. Many a times they were spoken, many a times they were not spoken. I think the biggest boundary I broke was entering films. Yeah. Kudos for that. Yeah. Thank you for That's so existing. kind. My question actually is a rapid fire for the first time. Did you have a certain person who ever told you कि आप इतना हंस सकते हो या इतना कम हंसने का, इतना जोर से नहीं हंसने का, क्योंकि आप खुल के हंसते हो? No. नहीं ना? No. वो है देखिए इनसाइट. कभी किसी ने ये बोला कि ऐसे बैठ सकते हो पैर ऐसे रखने का? Never. वाओ, टच वुड बॉस. Yeah, थर्ड, कभी wood. लाइक किसी ने बोला कि इनके साथ बाहर जा सकते हो, इनके साथ नहीं जाना, ये ऐसा? हाँ, वो तो मतलब basic at a learning certain age my parents मुझे limitations थी. वो that's their way of protecting. बट हमारे जमाने में गुड टच बैड टच वाला भूमि कोई नहीं देता था ज्ञान. वो कभी मिला? नहीं, मुझे मिला है यार. मेरे पेरेंट्स ना काफी चीजें हमारे साथ डिस्कस करते थे. अरे वाह. वी वर टोल्ड कि स्ट्रेंजर्स के गोद में नहीं जाना है. वो कोई फार ऑफ अंकल हो, फैमिली मेंबर हो, ये मेरी मम्मी ने हमें बोला है. बॉस ये तो बहुत अवेयर है ये लोग. या मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई. इट्स ट्रूली अ प्रिविलेज. और कोशिश यही है कि हम जहाँ पे भी जाए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए. बट कभी भूमि बाहर निकली आप रास्ते पे दुर्व्यवहार या किसी ने, हमारी होटल है की एडिटर इन जानवी, शी गॉट फ्लैश्ड राइट आउटसाइड लोलापुलूज़ा. We actually spoke about it. You did? She is so brave and Did you ever happen to have any brush off public incident? There's this one time that I remember very very clearly. Bandra में ना fair लगता था and MMRDA वगैरह में. तो I was with my family. कितने साल की होंगी आप? I was a teenager. I think I was 14. I knew what was happening. It's not like I was unaware. तो बहुत भीड़ थी और मैं आगे जा रही थी और मुझे बार बार somebody was pinching my ass. बार? या और मुझे मुड़ के देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन है. इतनी भीड़ थी, and again somebody is trying to like touch me inappropriately. And I was getting paranoid because I was like with my family, but a whole bunch of kids from my building as well. We all had तो gone. आप लोग सब घूम रहे होंगे. और मुझे समझ नहीं आया, लेकिन तब मैंने कुछ बोला नहीं because I was so thrown off by what had happened, and I still remember how that felt. I remember how the poking, how the pinching, it just like your body remembers that trauma. These are traumas that you can't get over. And many a times आपको पता ही नहीं होता है यार उस भीड़ में कौन है वो इंसान. I have friends that have been flashed. स्कूल के बाहर, this was a very big thing that had happened. जहाँ पे there was a auto rickshaw driver. अपना जुहू में. Back then एकदम बाहर नहीं था स्कूल के, around the area, because हम लोग इतने बार चल के जाते थे etc. Like he would be doing his business. And this is a sickness. I mean, how do you reach that stage of such heightened emotion that you think this is normal? And a lot of it comes from education. और वो बच्चे हैं, वो लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनकी दिमागी हालत पे क्या हो रहा होगा आपको पता भी नहीं है, और आप क्या पा रहे हैं करके. लोग हमसे पूछते हैं, हम ये क्यों पूछते हैं? हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि मेरे को तो उस एक औरत से मिलना है जो ये बोल दे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है. यार मुझे भी मिलना है. I've had friends की रिक्शा में बैठी हुई है लड़की and somebody's come, grabbed her, hit her on her chest and run away. But at that moment you're so paralyzed and traumatized and you just don't know what to do. There are people that have seen it. You feel so violated. Moving on from this. Yes. You and your sister. How much does a sisterhood help? कितना आप एक दूसरे से अपनी बातें करती हो? क्या नोकझोंक वाले फेजेस रहे? क्या मतलब आगे बढ़ी evolution? And also like entrepreneur, lawyer, like kudos to her. Apart from the fact that you all look eerily similar. Samiksha is, I don't know what my existence would be without my sister. It's never my journey or her journey. It's always our journey. Everything that we do, even her, is with the idea of it being productive for both of us. Best. Vice versa. And obviously, जब बच्चे थे
इतना लड़ते थे and we were inseparable even then. Like हाथापाई कर अरे भर के हाथापाई. But nobody could come in the middle of us. You know, अगर कोई अब मम्मी भी अगर आके कुछ बोलती थी, then she would be villainized because this is like our thing and that's how our bond has evolved. And I just feel like sisters have that. Yeah, it's embarrassing, but till a good adult age, we would like scratch each other, pull each other's hair. I hope we are not capable of doing that now. It's been a while, but we trigger each other, but it's so short-lived. We can't live without each other. Possible ही नहीं है कि 5 या 10 मिनट से ज़्यादा कुछ चले जाए. There's nobody who understands me better than her. We are business partners, we are life partners. She's my best friend. Just having a sister, जो एक soulmate का level होता है ना, in a romantic companionship way, वो एक बहन बहुत हाई कर देती है. फीमेल फ्रेंडशिप बहुत हाई कर देती है. मैं उधर ही आने वाला था. ये क्वेश्चन ही लीड टू दैट है. हाँ, तो फीमेल फ्रेंडशिप फॉर एवोल्यूशन ऑफ योर ओन पर्सनल लाइफ एंड ग्रोथ, फीमेल फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सही. मतलब ये होता है हमारे बीच के तुझसे बेटर कोई है ही नहीं. क्या होते हैं आपके नाइट आउट्स? बहुत सारा खाना होता है. बहुत सही. देन बहुत सारी बातें होती हैं. उन बातों में गॉसिपिंग, दुनिया भर की चीजें and things that we've discussed like 100 times. Also will come back. Will also come back. And you know, we have like these groups that we are constantly chit-chatting on. Everything. It's oversharing to levels I can't explain. You know, I was actually, Samiksha and I were speaking that day. I was like, dude, you know the amount women overshare, and we really overshare. It's like, imagine if men would do the same thing. How uncomfortable would it make us? Let's see this. Okay, drop your keywords for only your female friends and they should also drop your keywords back. Let's see how many women can actually relate to this. Because right now I was like, बंदों के साथ भी होता होगा, but then you described these things which I'm just like, wow. हमारे nature में है to overshare हर चीज के बारे में, you know, and also I feel women in general are very very secure. True female friendship ना आपका एक cushioning होती है. बहुत सही. पैसे वैसे आप खुद मैनेज करती हो? Like have you had your financial? मैंने बचपन से पैसे खुद मैनेज किया. I started working very young and for obvious reasons because you know my father fell sick and I realized very young that I had to kind of take the reins in my hands. My parents did the best that they could to make sure, but I had to take on a lot of responsibilities. So I started earning my own money when I was 17 and touch wood I've never 7,000 रुपए. 7,000. Yeah, it's been a journey. वो मजा आता है ना जब उतने की EMI होती है जब पहली बार. अरे यार मतलब वो 7,000 से लगता था कि मेरी पूरी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी. Yes. That amount felt like the first time I found out वो इतना मुझे empower किया था ना उस amount ने, मुझे पता नहीं how I survived it. भले 20 तारीख को खत्म हो जाए. But I survived it. 20 तो बहुत लेट बोल रहे हो बॉस. 7,000 उसमें मेरी whistling woods की EMI भी जाती थी. Very fortunate to have great people that also supported me through those years. But generally साइता मानकर जैसे आपके साथ एक co-artist है तो like you have this like energy exchange also जो सेट पे होता होगा ना. पे parity या सेट में जो हमारे मेल फीमेल रेशियो होता है उसका कभी आपने ऐसा लगा कि यार और होनी चाहिए औरतें ऑन सेट? बिल्कुल और होनी चाहिए. या आप पे पैरिटी के लिए कभी लड़ी हो तो ये दोनों? ऑफ कोर्स मैंने पिक्चरें बना की हैं और ये भी ना एक लर्निंग से आई. बहुत अर्ली ऑन इन माय करियर मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी. आई वाज लिटरली पेड 5% of what the male co-star got. That's it? I calculated it. I realized when you have 5% to be giving 5% of what the male co-star got and we were at equal footings. You know, I'm not being unrealistic where there was like somebody who's been here for way longer and achieved a lot. We were on equal footing. चलो मैं बोल देती हूँ अगर 18-20 भी है, that's not what my worth is. And I did it then because I didn't know better. But then I realized that अब ये नहीं करना. अब ये नहीं करूँगी. I know what my value is. I know what my worth is. If you think that that's all I bring into your film, I'm happy not to be a part of it. बहुत ज़्यादा gap अब भी है. लेकिन मैं with every decision वो gap cover कर रही हूँ. Kudos. Thank you. वुमनहुड को लेके ना इतनी सारी डिबेट्स होती है, इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होती है एंड वो कभी इनफ नहीं होगी बिकॉज मैं जितने भी झंडे गाड़ने की कोशिश कर रही हूँ ऑन एन एवरीडे बेसिस आई डील विद सेक्सिज्म. लाइक माय सिस्टर एंड आई वी आर स्टार्टिंग लाइक अ वेंचर ऑफ आवर्स टुगेदर. आई कैन सी द डिफरेंस व्हेन हर एंड आई आर टॉकिंग टू अपोज टू लाइक अ हाई लेवल एम्प्लॉय ऑफ माइन हु इज अ मेल हु इज टॉकिंग एंड सडनली द एनर्जी ऑफ द रूम चेंजेस. To vendors, to big boardroom meetings. I am the owner. I am paying you.
I'm just laughing at the absurdity Like, of this. imagine they can't even look at me in my eyes and have a straight conversation with me. हाँ, ये क्यों करते हैं कई सारे मर्द, मेरे को नहीं पता है वो. जैसे They're not अगर like, मैं आप भूमि हो और मैं वो इंसान हूँ, there's a man, वो मेरे बारे में यहाँ देख के बात कर रहे हैं. मैंने कहा I have seen this happen with my wife. मैडम को बोली इतने में नहीं हो पाएगा. And I'm like, अरे मैडम उधर खड़ी है, उसको बोलना डायरेक्ट. It's ridiculous ना. मतलब मैं तो now तो I call them out and see for us also on our level ना हम बहुत protected है because of the career that I have. I just imagine like kudos to all those women that have like really gone out there and really killed it in the startup business world because boss it's tough. Sexism सिर्फ मेरी इंडस्ट्री में नहीं है. अरे पूरी सब इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भरी हुई है हर जगह. Constant mansplaining. This is my baby. I know what I'm starting. What are you going to tell me about what? ये मैं आपके पास लेकर आई हूँ. मैं आपको मुझे समझाने के लिए नहीं आई हूँ. This is an exchange. हाँ. And ये constantly होता है. And it अभी तक literally, होता है? of course. आप दिग्गज कलाकार हो फिर भी. It doesn't matter. नहीं फर्क. Because I've not. It doesn't matter, and I think ये हमेशा रहेगा. And it would really like upset me at the beginning of it because also in my ecosystem my presence is different, right? And I get that presence over there also, but our ideas are constantly questioned, not in a healthy way. There's a difference between you challenging me to you like questioning my intelligence and my integrity and my vision. तो मैं तो उनके साथ काम ही नहीं करती. खैर बहुत सही. हार्ट ब्रेक्स यार, मैं ये बताओ मेरे को कि हार्ट ब्रेक्स क्या टीच करते हैं और फिर आप क्या समझती हो कि यार ये बॉयज के साथ ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे को तो चाहिए ही नहीं. एंड यू रियलाइज दैट यू वुड आल्सो गिव इन टू सम थिंग्स एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट गिविंग इनटू दोस थिंग्स? I feel every relationship at a certain age teaches you very different things. So the person that I was in a relationship in my 20s to what I am today are very different people because my tolerance for bullshit is very low right now. It is very, very low. And because I'm a romantic, I do like, give things a chance, but a red flag never changes. बता दो ना रेड फ्लैग्स. हम वेट करते हैं ऐसी चीजों के लिए. So, somebody who is disrespectful, who is, regressive in every way possible, who is insecure of what I do, who is insecure of the personality that I am. It is also a red flag for me if I feel I cannot be a good partner to somebody because our ideals can be different. मैं भी किसी के लाइफ में रेड फ्लैग हो सकती हूँ. So I just feel like compatibility, kindness. Yeah, these are green flags. Like if you I need that. If you're a kind, that for me, like kindness is a very big turn on. Compassion is a very big turn on. How are you towards animals? Like, how are you towards the planet? These are your core ideals. Yeah. कितना कठिन है आज की दुनिया में डेट करना? Are you on dating apps? I was. It's very boring. I just feel it's very disconnected. I don't enjoy the experience of being on a dating app. As somebody who is in the public, I am a lot more vulnerable. So I anyways have trust issues. मुझे बहुत boring लगता है. I'm just so bored. It's not my scene. बहुत सही. ठीक है. You've had releases back to back. Yes. 2022 में बधाई दो, 23 में आपकी Thank You for Coming. Yes. 24 में अब भक्षक आ रही है. Just the consistency कितना भूमि टोल लेती है. What is it like to be a woman in today's day and age? This is a very complex question. I think just existing as a woman in today's time and age is extremely thrilling. It comes with a whole bunch of challenges, but it's so much fun to take them on head on. There are days that you kind of get demotivated, but then something great comes out of that energy and you're like, let's battle. But औरतों में ना एक हमारे नेचर में होता है that सहनशीलता नहीं, पेशेंस, सहनशीलता, but हमें बहुत होप है हमारी लाइफ्स में और ये मुझे लगता है जेनेटिकली औरतों में है. हमें क्षमता है कि we can fight the gravest of problems. I don't think we crumble. And I've seen such phenomenal women around me. जब आप ऐसी हार्ड हिटिंग फिल्म करी हो भूमि, जब आप देखती हो उसे स्क्रीनिंग में, तभी क्या लग रहा है कि क्योंकि पहुंचना चाहिए ना उतने लोगों तक. मेरा यही चाह रहता है कि भक्षक जैसी फिल्म इतने लोगों तक पहुंचे. यार मैं भी यही चाहती हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था. हम ना एक बहुत ही सेंसिटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑन चिल्ड्रन दैट आर ऑर्फन्स दैट हैव नोबडी टू गो आस्क देम आर यू ओके. पत्रकारों के प्रति थोड़ी सद्भावना आई क्या? हमेशा थी. एक बहुत ही इंटेग्रिटी का काम है और ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं वो रिमाइंड भी कराती है किसी और द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. यू हैव द पावर टू सेट द नैरेटिव ऑफ व्हाट्स द ट्रूथ. 16-year-old सेल्फ को एक मैसेज देना होता तो क्या बोलती भूमि? कीप गोइंग, यू आर डूइंग वेल. दैट्स इट? Yeah. I love it. Yeah. Shortest 16-year-old self answer that you because that I had so anybody's much given. self-doubt. You did? Of course. So much self-doubt. बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं तो क्या दिमाग में बोल लेगा कैसे आगे बढ़ने का?
यार क्या दिमाग में बोल सकते हैं ये नहीं पता, लेकिन इट्स अ जर्नी ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ फॉर हु यू आर. मुझे बहुत साल लगे हैं. आफ्टर many years I've reached a place where I've accepted myself with all my flaws. Just keep giving yourself love, yaar. But tell me this, like, what is coming? What do we look out for apart from Bhakshak? You can also talk about Bhakshak. I think I would just want to kind of concentrate on Bhakshak. So 9 फरवरी को Netflix पे आ रही है. It's a Netflix original, and I really hope that all of you champion the film, because this is one film like so that needs to reach far and wide. आप लोगों को कैसा लगा बताना, कमेंट्स में इनसाइट्स दे देना, और जो जो चीजें मैंने बोली हैं शाउट आउट पे वो कर देना. सब्सक्राइब टू हाउ टू फ्लाई. यूर अ हगर, नो? I'm a hugger. Thank you so much for being on the Male Feminist.